So this is part 2 of your unit 5 national income and related aggregates. First of all हम यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं फैक्ट्री इनकम और ट्रांसफर इनकम के बीच का. So पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम इनके मीनिंग से निकालते हैं. फैक्ट्री इनकम के बारे में आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हम बात करें जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, उनकी कुछ अर्निंग्स है, उनकी कुछ इनकम है. वो इनकम जो फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट की होती है. व्हाई? बिकॉज ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनकी हम बात करें, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये अपनी सर्विसेज प्रोडक्शन के लिए देते हैं. दे रेंडर देयर सर्विसेज, दे गिव देयर सर्विसेज फॉर taking out, for carrying out production. So that is what you call as factory income. On the other hand, if you look at transfer income, it is the income which is received without rendering any services for production. इसका क्या मतलब है? कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो कोई सर्विसेज दे रहे हो फॉर कैरिंग आउट प्रोडक्शन. सो ये जो इनकम है ये होती है लाइक स्कॉलरशिप और ओल्ड एज पेंशन. सो इसके बदले में इनको हमें कुछ देना नहीं पड़ता. ओके, सो बेसिकली स्कॉलरशिप जैसे हम बात करते हैं, से गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग अ स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स कौन से सेक्टर से आ रहे हैं? हाउस होल्ड सेक्टर से. उसी तरह से गवर्नमेंट गिव्स ओल्ड एज पेंशन to all those who are falling in that particular age bracket of old citizens of India. तो ये ओल्ड एज पेंशन के बदले में वो सिटीजन्स, वो जो इंडिविजुअल्स हैं, वो गवर्नमेंट को किसी तरह की सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, कोई भी रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज नहीं हो रहा है फॉर प्रोडक्शन. सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज ट्रांसफर इनकम. ओके, सो द एग्जांपल्स आर क्लियर. Here the examples are rent, wages, interest and profit. Here it can be transfer income, can be in the form of scholarship, old age pension. It can also be fees and fines which the government collects from household sector or from firms. Okay, so this is the basic difference between the two. अब इसका टाइप क्या है? अब जैसे मैंने बताया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई सर्विस दे रहा है, उसके बदले में उसको इनकम मिल रही है. सो बोथ साइड्स, सो हम बोथ साइड्स is the same thing as bilateral. Bi means two, lateral means sides. So it is a bilateral payment. जबकि यहाँ पे I have already told कि यहाँ पे कोई सर्विसेज रेंडर नहीं की जा रही, कोई भी सर्विसेज कंट्रीब्यूट नहीं हो रही फॉर प्रोडक्शन. सो ये विदाउट गेटिंग एनी सर्विसेज वो कुछ पेमेंट कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज सिंगल साइडेड, दैट इज इट इज यूनिलैटरल. हु आर द रेसिपिएंट्स? फैक्टर इनकम कौन रिसीव करेगा? ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जबकि ट्रांसफर इनकम कौन रिसीव करेगा? वो हो सकता है हाउस होल्ड सेक्टर, इट कैन बी फर्म्स, कोई नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन. दे ऑल गेट दीज काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट. वाइस वर्सा भी हो सकता है, दैट इज द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गेट सम काइंड ऑफ ट्रांसफर इनकम फ्रॉम ऑल दीज. इंक्लूजन की बात करें तो जो फैक्ट्री इनकम है वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. व्हाई? बिकॉज जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो दे आर लीडिंग टू सम काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, इसलिए हमें इसे नेशनल इनकम में पक्का लेना ही लेना है. ऑन द अदर हैंड जो ट्रांसफर इनकम है वो किसी तरह की कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. व्हाई? बिकॉज कोई सर्विसेज रेंडर नहीं हो रही है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो. Here as you can see we are taking the difference between stocks and flows. So what is the basis of difference? First of all, if we take up the meaning, stocks is nothing but quantity measurable at a point of time. For example, say you have an overhead tank in your house, and in that tank at present, say at 10 a.m. there is 200 liters of water. So that tank is up to its full capacity. That 200 liters of water is what you will call as stock. On the other hand, flows is the quantity measurable over a period of time.
Say in a day, out of that overhead tank, we are using 50 liters of water. So that 50 liters of water has been used out of the total of 200 liters of water. This consumption has been per day. So any quantity which is measurable per day, per hour, or per month, per quarter, or per year is what you call as flows. You can take an example of an economic concept also. Here I have shown a bank having my saving account. So say on 1st April 2020, there is 1 lakh rupees in my savings account. That amount is what you will call as stock. Suppose that stock has been made up by deposits done by me over a period of time. Say every month I am depositing 5,000 rupees in my bank. So those deposits are what you will be calling as flow. So the flow is leading to the formation of this stock at a particular point of time. Further, I can also say that if each month I am withdrawing 2,000 rupees from my bank, that is also flow. So, the next important difference is that of time dimension. That is, as you have seen earlier, stock is not time dimensional. We are measuring it at a point of time. On the other hand, flows are time dimensional. We are measuring it over a period of time, maybe per month, maybe per quarter or per year. Then when we talk about the nature, the stock concept is static. It is not changing, while the flow concept is dynamic. It changes over a period of time. So as we talk about the relationship between stock and flow, we say that stock can influence flow. Whenever see there is an increase in the stock of capital, that is investment. Whenever we are making an increase in investment, there is going to be an increase in the production, that is increase in the flow of goods and services. Similarly, flow can also influence stock. Let us again take the previous example. If there is an increase in the deposits, say we are increasing the deposits from 5,000 to 10,000 per month. Naturally, you can see that overall deposit at a point of time on 1st of April 2020 will increase. It will be there greater than 1 lakh rupees. Okay. So, whenever there will be an increase in deposits, there will be an increase in the total money in my savings account. Another relationship is that some of the concepts, there can be the concepts of imports or there can be the concept of exports. So these concepts, they do not have any stock concept. Here we are talking only about flow because imports and exports are taken up over a period of time. Further, we talk about circular flow of income. What is the circular flow? Circular means like a circle. It is happening continuously, some kind of movement of goods and services and money. So इसका base क्या है? We say कि एक economy में there are 4 sectors: households, firms, government, and fourth one is external or what you call as rest of the world sector. इन सबके बीच में कोई ना कोई transaction होता रहता है. So that forms the basis of this circular flow of income. Now 12th के syllabus में you are concerned mainly with a 2-sector model, that is what we have in a simple economy. Here you can see that I have taken just 2 sectors. One is the household sector and the second one is the firms. Now, if you have a look at it, you can see here point 1. I am saying that households are rendering, they are giving the factor services, means those services in the form of land, labor, capital and entrepreneur to the firms. Now, firms will undertake production with the help of these factor services. Okay. So, in return, the firms need to make some payment. Suppose I am lending out land, they have to give me rent. If I am giving labor, they have to give me wages. So, the firms make these factor payments to
the household sector in the form of rent, wages, interest and profits. Then the firms, they have produced something with the help of those factors of production, etc. Now, whatever are the goods and services which have been produced by the firms, they sell it, they give it to the household sector. And in return, what will the household sector do? It needs to make some payment. Okay, so that payment is what you call as consumption expenditure. So if you look here, I have marked the first and the third point in red arrows. So these are in the form of goods and services. So I call them as real flow. On the other hand, if you see closely, I have marked the second and the fourth arrow with the help of black ink. So I call them as monetary flow or money flow simply, because everything, every transaction is taking place in the form of money. So based upon this, we take up the differences between real flow and monetary flow. Now, what is real flow? If you look here, when we talk about the meaning, real flow is the flow of goods and services. Whatever is the exchange, whatever is the transaction taking place in the terms of goods and services between the households and the firms is what you call as real flow. On the other hand, monetary flow का क्या मतलब है? Any flow of money. Any flow of money which takes place between the households and firms. अब एक्सचेंज का टाइप देखिए, रियल फ्लो मींस एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज का. ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी फ्लो का मतलब एक्सचेंज किस चीज का हो रहा है? मनी का. डिफिकल्टी लेवल. नाउ रियल फ्लो इज रियली डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट द लेवल ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. इफ यू रिमेंबर, जब भी हमें ट्रांजैक्शन करना है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट बिकम्स डिफिकल्ट. On the other hand, अगर monetary flow की बात करें, it is not difficult. Then we move on. What is the other name given to real flow? So, real flow can also be called as physical flow. What do we call it? We call it as physical flow, because जो भी transaction हो रहा है वो physical form में, in forms of goods and services हो रहा है. On the other hand, monetary flow को other name that we give is what you call as nominal flow. आपके लिए समझना जरूरी है कि in any economy there is a cycle going on like this. There is generation or what you call as production. Production होता है तो उसमें factors of production involved होते हैं. So they earn money. उनकी जो money earning है, that is what you call as distribution or income, that I have denoted here with the help of symbol Y. And this income which they have earned, वो जो income है वो या तो consume करेंगे या फिर save करेंगे. तो मैंने उसको मेंशन किया यहाँ पे एज डिस्पोजिशन, कि वो किस तरह से डिस्पोज करते हैं या उनका एक्सपेंडिचर कैसा हो रहा है. सो या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या फिर आइडियली क्या होना चाहिए, ये जो सेविंग्स है ये इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए. सो या तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा या फिर वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा. ओके, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो मैंने यहाँ पे के डिनोट किया है, के मीन्स कैपिटल फॉर्मेशन होता है उससे. सो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है, इट इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन विच गोज इनटू फर्दर प्रोडक्शन. ओके, हम किसी भी तरह की मशीन लगाएं, प्लांट लगाएं, कोई मतलब फैक्ट्रीज वगैरह एस्टैब्लिश करें, ठीक है, सो जिससे कि फर्दर प्रोडक्शन हो पाए. तो इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम. एक फर्म है, एक फैक्ट्री है, सपोज एक होजरी मिल है, उसने वुलन गारमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो वो एक फ्लैट मशीन लगाता है, ठीक है. तो वो जो फ्लैट मशीन है उसको हम उसकी इन्वेस्टमेंट कहेंगे. अब इन्वेस्टमेंट में भी फर्दर टू टाइप्स होते हैं. एक होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होता है नेट इन्वेस्टमेंट. ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है?
टोटल एडिशन, जितना भी हम एडिशन कर रहे हैं टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, एक साल या एक क्वार्टर में. On the other hand, net is nothing but again net addition. ठीक है, net addition made to the physical stock of capital during a period of time. ग्रॉस में नेट और डेप्रिसिएशन दोनों इंक्लूडेड होता है. ठीक है, ये आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये वाले जो कंसेप्ट्स हैं ये आपके एग्रीगेट में भी यूज होते हैं. और नेट कैसे हम निकालेंगे? नेचुरली ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे. अब तुम सोचोगे मैडम बार बार डेप्रिसिएशन कह रही है, ये डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. जो हमने फिक्स्ड कैपिटल लगाया वो किसी ना किसी वजह से उसकी जो वैल्यू है उसका लॉस होता है. सो दैट लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज व्हाट यू कॉल एज डेप्रिसिएशन. ठीक है, आपने ध्यान रखना है ये इनमें से कोई भी टर्म्स आपके न्यूमेरिकल्स में यूज हो सकती हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, एनी ऑफ दीज थ्री इफ मेंशन्ड, इट मींस डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन जब भी होता है उसके रीजंस क्या होते हैं? एक नॉर्मल वियर एंड टेयर, एक मशीन चल रही है, आफ्टर अ वाइल वो चलने में प्रॉब्लम दे रही है, इट रिक्वायर्स सम मेंटेनेंस, इट रिक्वायर्स सम रिपेयर, उसका कोई पार्ट्स हमें रिप्लेस करने पड़ते हैं या ग्रीसिंग करना पड़ता है. जैसे आप कार चला रहे हो, कार का वियर एंड टेयर होता है, आफ्टर अ वाइल उसके कोई ना कोई इंजन ऑयल हमें चेंज करनी पड़ती है या उसके जो टायर्स हैं वो हमें रिप्लेस कराने पड़ते हैं. सो दैट इज व्हाट यू कॉल एज नॉर्मल वियर एंड टेयर. फिर कोई भी मशीन जो आज आप यूज कर रहे हो, सपोज यही हॉजरी मिल का ही एग्जांपल ले लो, ये जो मशीन जो मैं आज यूज कर रही हूँ वो 5 साल के बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी. ऑब्सोलेसेंस मतलब आउटडेटेड हो जाएगा, कोई नई चीज आ जाएगी उसकी जगह. तो इसकी वजह से भी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो मेरे पास आज टेक्नोलॉजी मैं यूज कर रही हूँ ये 5 साल के बाद या फिर 10 साल के बाद जो है ये आउटडेटेड हो जाएगी, तो मुझे कुछ नया ही खरीदना पड़ेगा. So ये foreseen है, ये expected है. So this is also causing depreciation. Similarly, there can be some kind of an accidental damage. आपकी फैक्ट्री साइट में या फर्म में कोई भी किसी भी तरह का कोई डैमेज हो जाता है तो उससे भी depreciation हो सकता है. अब हम जानेंगे कि वो 3 कौन सी चीजें हैं जिनसे हम एग्रीगेट्स को इजीली स्टडी कर सकते हैं. डेप्रिसिएशन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, व्हाट इज डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. नाउ यू शुड नो कि इसमें हेल्प किस तरह की मिलती है. अगर हमने ग्रॉस से नेट निकालना है तो हमें इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा. अगर हमें नेट में से ग्रॉस निकालना है मतलब उल्टा करना है तो हमें नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा. ओके इसी तरह से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? यू आर अवेयर कि हम कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते हैं, वो टैक्स जिनका बर्डन जो है कंज्यूमर पे फाइनली पड़ता है, इनडायरेक्टली हमारे ऊपर बर्डन पड़ता है. ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस और एक और टर्म होता है सब्सिडी. सब्सिडीज मींस किसी तरह का हम कंसेशनल रेट पे जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि फार्मर्स को डीजल देने हैं या फर्टिलाइजर्स देने हैं. ओके तो हम इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का, तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. अब ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं अगर हम इसको मार्केट प्राइस में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फैक्टर कॉस्ट. ऑन दी अदर हैंड अगर हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस. सिमिलरली थर्ड मेन डिटर्मिनेंट क्या हो गया? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इससे हम नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अगर हमें नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो हम इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब कि वो जो डिफरेंस, हमने कुछ फैक्टर इनकम रिसीव की है बट एट द सेम टाइम हमने एक्सटर्नल सेक्टर को कुछ फैक्टर इनकम पे भी तो की है, तो वो जो डिफरेंस है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाती है. सो नेशनल से अगर हमें डोमेस्टिक निकालनी है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना है और वाइस वर्सा, मतलब कि
डोमेस्टिक इनकम से अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो हमें डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना पड़ेगा। इस सब से अभी तक आपको काफी कंसेप्ट्स इस यूनिट के क्लियर हो गए होंगे। In case you have any doubts, you can leave in the comment section. I will try my best to clarify them to you. Also, we will be taking up next in the part 3 aggregates and the methods of measuring income. So like this video and subscribe to my channel. Thank you so much.